Okay, in last session, what we have done, we have just make an environment setup for the APIs, and also told you everybody, I told you this thing that these APIs are developed by me. So I'm trying to create an environment for that. And same setup I will try to do on your system so that you can access the API locally. You don't need internet connection for that. Are you getting my point? So it is not a mandatory part. If you don't want to use my API, this part is not mandatory. Getting my point? So now once you have installed it, once you have installed it, every time what you have to do, every time when you will open your system, first of all, you have to open the NetBeans. Okay? What you have to do first, first time, you have to open the NetBeans because your services are configured in NetBeans. Is it okay? You can say yes or no. Is it okay? Yes. Okay, now the thing is that why I'm saying that whenever you will open your system, you have to open the NetBeans, because what is happening whenever you will make a shutdown of your machine, all the softwares are shut down. Your service is also shut down. So in this case, what you have to do, whenever you open your system, just open the NetBeans and click on any of your project. Okay, click on any project and just click on deploy. So you will see in this way, it will start a server. You can see here. Are you able to see? Glasses server 4.10 started it, and at the end of your screen, you can see hello, run, something it is trying to deploy. Are you getting my point? Yes. So in this way, actually, it is happening that whatever services I have configured on NetBeans or you have configured in your NetBeans, that will be automatically started. And once it will be started, you can access it from the any software. You can access it from the browser. You can access it with any API testing. Is it okay? Pradeep, I'm very much confused, to be very honest. So like, can I ask a question? Yeah, sure, like, sure. Suppose my project doesn't have any API automation like going on. Okay. Now I want to start it. I want to show something to my client. So you said that API will be shared by developers and we should not be doing the creation. We just need to do the testing, right? We are not developing, right? Yeah, we are not developing. Okay, so if I'm going to my tech lead, that okay, I want to automate API because he's a tech lead, so he's responsible for QA team and developers both. Right. So what should I ask? Like, what should I tell him that okay, this is my requirement, this is the information you need to provide, and then how to execute things from there to here? Like, like suppose you say the Pradeep REST project, right? So if I'm saying EY Canvas project, so what is going to be there? Yeah. So what happens that, suppose take the example, you want to start your testing using some API which is used in your company project. So you will go to the, you can say, concerned person, maybe your tech lead, you will go and then will ask, I will show you, I've shared you the document, right? So let me show you. He will also share you some documents. Maybe I will, let me check. So in this case, he will at least share you this document, something like this. One document, this one, SoapBase service txt, okay? And this document contains all the SoapBase services URLs. Getting my point? So you will ask that, first of all, your question should be your tech lead. Are we using any web services or API in our project? Getting my point? So if the answer is yes, you can ask the second question, which type of API? SoapBased or REST-based? Getting my point? Yeah. So when he will give you the answer that, okay, we are using the SoapBased API. So your next question will be, can you share me the WSDL? Can you share me the WSDL of that API? So in case of SoapBased service, WSDL service is the starting point of your test. Means this is the WSDL is actually a URL of a XML document. It is a URL of a XML document which gives the information about each and every operation in your SOAP service. Getting my point? So this, if you talk about this, you can see URL, it is a URL of a student web service. Getting my point? Yeah. So he will share you. So the first question, again, I'm saying that you will go to your tech lead or the concerned person and ask that, are we using any type of API in the project? If the answer is yes, the second question, what type of API we are using? We are using SOAP-based or we are using REST-based? If the answer is SOAP-based, you will ask for the WSDL.
And when you will ask for the WSDL, I will tell the second question will be, this is the WSDL. So now the thing is that I have to create the test cases, you can say itself, or the thing is that, is there any RFC document for that? Are you getting my point? Because the thing is that when developer develop the web service, definitely they should have any RFC requirement specification document for that, or requirement for change. Yes or no? Yes. So that document is going to help you that, okay, in this web service, RESDL URL he has already shared to you. Now you understand that how many operations should be there. How many operations should be there? What is the input expected? What is the output expected? What is the every information will be there. So on the basis of, you will start the testing. Now the case is that in the 99% cases, he only give the answer that, okay, this is the WSDL URL and I have nothing other than it. Okay, so you have to start your testing. So I will give you that worst scenario with you. I will share the worst scenario with you, that he will share you the WSDL URL and nothing. Is it okay? Yes. So when we say soap based, so is it kind of like done only with the soap? Like I'm aware, so soap is not being used in my project anywhere. Like instead for APIs, they use Swagger. Yeah, so the thing is that I told you that one type of service is SOAP based, and it was the first type web service which was introduced in the IT. And what happened that after some time they realized that there are some limitations of the SOAP based service, so they introduced a new type of service that is called REST. Okay, REST. so nowadays REST are more popular in comparison to the SOAP based. Getting my point? Okay. So in case of now, that's why I'm saying that if the answer, if you ask the answer which type of API we are using in our project, if answer is SOAP, you will get the WSDL. If the answer of the concerned person is that we are using the REST API, in case you will ask for the document that, can you share me all the APIs URL for the REST API, and that is very, very mandatory. And the document will be something like this. Let me show you. The document will be something like this. Are you getting my point? It contains every URL that it is telling you, and two things, not only three things are very, very important to test any REST-based API. The first part of the API information you need is the URL. Getting my point? Yeah. And second thing which you need for with the URL, that is the type of method, because it is totally, you can say, decided by the developer that what method they have used to call this particular API. Like to get our students, the document will tell you that this is the URL, and for calling or for triggering this URL or API, you have to use the get method. Getting my point? Yes. And any other than it, you don't need anything. But you will say in some cases, like take the example of get student by ID, you will see that it is giving you a URL, and in the URL, you will see if anything is written in the curly bracket. So curly bracket means it is expecting a parameter. It is expecting a parameter. So this is the standard rule of the API, that in your URL, if it is showing you anything in the curly bracket, it means it is not a hard-coded URL. In this URL, this ID will be replaced by some actual value. Getting my point? Yes, absolutely. So now the third thing is that in the case of sometime you will see, he will say that this is my create student, something like API. This is the URL and method it is using post. So whenever you are using the post method, definitely the purpose of post method that you are going to save some data in the database with the help of API. So there should be some test data. Getting my point? So test data he will provide in this format. Okay, this is the data you have to provide, means there should be a data of a student. There should be a record of a student you have to save in the database, and the structure which is expected by API should be in format. Like first of all, you can say the format is in XML, right? And in XML, you will see these are called the tags: age tag, student tag, name tag, and whatever you are writing between these two tags, age opening and age closing, that is called its value. Yeah. Getting my point? So the thing is that he will give you these all type of information, then you can start your testing. Okay, now second flavor which comes in the REST, that is called JSON. So you will see in case of JSON, if the API support the JSON format, in this case, he will share the document according to that. Let me take the example, this one. And so is there any possibility that he says that they don't have it documented kind of thing? No, that is not possible in this case, because reason is that when he will share you this URL, how you will come to know, that what type of method you have to use, because you are flexible to use any type of method.
Getting my point? But you have to choose which method, which is actually supported by the API URL. Getting my point? Okay. Because in the SOAP-based API, it is very, very simple thing, because you don't need to choose any method. You don't need to choose any method. But in REST, it is the responsibility of the person who is calling the API. He should know what type of method should be used with the API, and it is not something like that you are choosing. That is defined in the API, that this URL supports get method, this supports post method, this support delete method. So whatever is supported by the API, you have to use the same method. Getting my point? Pradeep, I am confused in one point. Like, see, all the URLs are same. For example, the second URL and third URL is same. So how you know that first is get and the second is delete for the Yes, rest? that is very, very good question, Murtaza. So here you will say very interesting thing. Well, I have told you that two things are important, very important, mandatory. One is the URL and second is the method. You will see in this case, when we are talking about this API to get student by ID, this URL is this one. But what is the type of method? Get. And in case of delete student by ID, you are sure, you are right. The URL is same, but the method is delete. So the combination of method and URL should be unique. Getting my point? It cannot be conditioned that two URLs are same and two methods are same. The two URLs can be same, but the method will be different. So in short, you can say the combination of method type and URL, it should be unique. Getting my point? Yeah, so the method will be defined in the JSON, right? Whether it is get or delete or put or whatever. Yeah, it is already defined the API. You have to get this information from the developer. Now you can see here, this URL and the URL of this post, this is also same. Yes, yes. But what is the difference? In the first case, you have to use the get method. When you want to fetch all the records from the database, you have to call the API URL with the get method. It will return all the data. But whenever you are using with the same URL, you are using the post method and you are passing some data, it will actually save or create a record. So purpose is totally different. Getting my point? So I will show you one by one. Don't worry about that. So this is the, you can say, base reference. So again, the thing is that in your company, they will share you this URL, WSDL URL, or share this document, and your testing will be started. In the last session, what I told you, that this service is actually developed by me. So I have shown you the configuration part. If you have your own API, you don't need to configure. Getting my point? So ये जो मैंने API आपको दी है, ये मैंने खुद डेवलप की है, तो मैंने इसको कहाँ कॉन्फ़िगर किया है? नेटबीन्स में, और इन्हीं के URL आपको दिख रहे हैं यहाँ पे सारे. तो अगर आपके पास खुद की API होंगी, तो आपको मेरा सेटअप नहीं करना है. आपको ये URL कहाँ से मिलेंगे? खुद की कंपनी. Different. Are you getting my point? And the rest of the testing will be same. Now let me show you what is happening. So in case of when we are going to test the SOAP-based API, so I told you what is the first point you have to you can say understand. What is the first requirement is WSDL URL. You need this WSDL URL, and then you will start your testing. So in this testing, what you have to do, if you are going to do the testing with the help of any tool like SoapUI, you will just open it. So let me open. Let me open this one. Okay, I'm opening this pro version. I have told you that you have both the versions are with you. You have SoapUI Pro version and you have SoapUI free version. So whatever is your requirement, or we can say whatever you are interested, you can use both. Okay, so now I will simply do one thing. Let me close this thing because I'm using the crack version. So please do not try to update. Okay, now here the start in SoapUI tool, you have options file, and then you can start. You have an option new project, new SOAP project, and new REST project. So when you are going to test SOAP project, you will click on new SOAP. Getting my point? Now, obviously you can see here what type of input is expecting, the name of the project and the initial WSDL. Getting my point? Yes. So already it is telling you that whenever you want to test any API, SOAP-based API you want to test, it is only the one input it is required, that is WSDL, and you have this WSDL. You can get this WSDL from the consultant. At least this, he will share with this thing. He can't deny for this. He can deny for other information,
But this is the main, because you don't know what you have to test and from where you will start, how you can start. Yes or no? So definitely will share you this thing and you will put this URL here. Getting my point? In the visitor. Now in the project name, you have to select any name, means you can choose on the basis of your requirement. For example, here I have, because I have taken this name several times, so I can choose any name. I can choose the name on your basis, like Prachi website. This is just like a name of a project which you are you can say selecting to identify in your SoapUI tool. Getting my point? तो ये आप प्रोजेक्ट का नाम क्यों रख रहे हो कि आप अपने टूल में देखो मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए, मैं कैसे पहचानूंगा कि जो मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ वो किस प्रोजेक्ट में. सो यू कैन चूज एनी नेम हियर. गेटिंग माय पॉइंट? Yes. Only the important part is that visual. So visual you have kept it here. Let me click on OK. When I click on OK, you will see left side, you will see able to see this project Prachi Web Service. So what is the benefit of this tool? Every information which I've shown you, you want to see one thing. Let me open this visual document in a browser also. In the browser, you can easily see the document structure. This document is also written in a XML format. Are you able to see this document? Yeah. So this document, this URL is actually a document and which is written in the XML format. And this URL contains every information. Because okay, this URL contains every information. That what is the URL? For example, just go to the last of this page. Are you able to see this? There is a tag that is called service name, student web service. Yes or no? And you can see the location of service. Yes or no? Yeah. So it actually this visual URL document, or you can say document, contains every information. Here you can say how many operations are supported by this visual URL. You can see here every operation is defined by a tag that is called operation. Are you able to see one operation tag, two operation tag? Yes or no? Yes. So you can see delete student, get student by ID, get all student, add student. So these are the operations which is available in this service. So actually you can say this document contains every information, that what is the input, what is the output. But the thing is that it is very, very tough for you to read this document. I have little bit more knowledge than you. That's why I'm able to tell you each and everything. This is the service URL. This is the operation. Are you getting my point? And Yes. how, if you want to call it, what type of request structure you need, what type of response you will get. Everything is mentioned in this document. Is it okay? Yeah. But it is very tough for us. It is very tough for us to understand this document because we should know every tag, the purpose of every tag here. We should know what is the purpose of message tag, what is the purpose of part tag, what is the purpose of operation tag, and we have to learn this. If we don't want to learn this, it is also not a problem for us. Reason is that simply you provide this URL in SoapUI and it also do the same thing for you. ये भी क्या करता है, जब आप अपना URL को यहाँ पे देते हो, so आपने देखा it read the URL and shown you every operation here, yes or no. इसने आपको सारे operation in form of UI show कर दिया. Yeah. So it is the first help which is provided by the tool to you, that is it takes the input as a visual and it reads whole the visual document and extract all the information and shown you just like a UI option. It is telling that you have add operation, you have delete operation, you have get all, get student ID and empty. Now how you can call it? It also created a sample request for you. This one, just double click on it. Now you can see here. Now you can see here, this API is telling you that how many parameters you have to pass to call add student. Name, age, subject. Yes or no? Yes. And it is showing you in the UI format because you have selected the form. By default, you should go with the XML because this is the actual structure. This is the actual structure. And if your concerned person, your tech lead is giving you the proper document, this request will be given to you. You can check my document. Sample request is given. Yes. So this information should be provided. अगर नहीं provide कर रहा है, then in that case also it is not a big challenge. क्यों नहीं है? अगर आपके पास visual URL है, if you have the visual URL and you are creating any project in the SoapUI tool, automatically it's showing you everything here. Yes or no? It is creating a sample request. Yes or no? Yes.
तो ये आपके लिए लाइफ यहाँ पे इतनी आसान कर दी, लेकिन आपके पास एटलीस्ट यू शुड हैव द विजडम। ये इन्फॉर्मेशन दे देता तो बहुत बढ़िया था, नहीं देगा तो आई डोंट, इन दैट केस आई हैव टू मेक लिटिल बिट एफर्ट। गेटिंग माय पॉइंट? Yeah. और आपको हाउ यू विल गेट दिस इंफॉर्मेशन, यू हैव टू गो टू द document which is provided by the client or which is provided by the manager for the development purpose। जो development के लिए document है वो आपको अपने पास रखना पड़ेगा। Reason is that it will show you the request, but you will get the, it will show you the request part, and whenever you pass some data here, how you will come to know that age should contain the numeric data, age should contain, name should contain the alphanumeric data। Are you getting my point? कैसे पता चलेगा जब तक आपको डॉक्यूमेंट नहीं होगा कि इसमें डेटा का टाइप क्या क्या सपोर्टेड है? गेटिंग माय पॉइंट? Yes, Pradeep. तो ये सारे स्ट्रगल होते हैं अगर उसने आपको शेयर नहीं किया। अदरवाइज इन दैट केस वी हैव टू मेक R&D। हम कैसे करते हैं? for being, you can take the example, I just configure this visitor URL, I got this operation, now I want to check it. So in the name I can pass some data, like take the example Prachi, Prachi. In the age I can pass something like 22, and subject, for the example, I can change it. So I pass each and every parameter. Now click on this green button. Are you able to see right side response? Yes. You can see the response, but the thing is that you are able to see the response, but how you can say that this response is right or wrong if you don't have any reference document? Getting my point? आपको यहाँ पे क्लिक करा, रिजल्ट मिल गया, रिजल्ट मुझे समझ में आ रहा है कि रिजल्ट मिल गया, यहाँ पे 292 एक आईडी बन गई है आपका डेटाबेस में, शायद डेटा जो स्टूडेंट का रिकॉर्ड है दैट इज आल्सो क्रिएटेड, बट दैट इज द एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर। यही मैसेज आना चाहिए था, स्टूडेंट एडेड सक्सेसफुली आना चाहिए था, यूर स्टूडेंट एडेड सक्सेसफुली, समथिंग लाइक दैट। तो जो मैसेज आना चाहिए वो कोई एक्सपेक्टेड आपको कहीं ना कहीं पता चलना चाहिए। यस और नो? Yes. तो ये आपके जो डेवलपमेंट के डॉक्यूमेंट में होता है वो होता है, तो वहां से आपको निकालना पड़ेगा, ये एफर्ट आपको करना पड़ेगा। अदरवाइज द स्टैंडर्ड प्रोसेस इज दैट ही शुड, डेवलपर ऑटोमेटिकली शुड शेयर द डॉक्यूमेंट टू यू। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी वी कांट से somebody is doing or not। ठीक है, तो मैंने आपको चैलेंज भी बता दिया कि क्या करते हैं। विजिटर तो आपको देखा वो ऐसे करता है, ये ले लीजिए काम करो, आगे टेस्टिंग करो। So it is something like the behavior of the, you can say, developer, क्योंकि उनको लगा you can do, they don't want to make our life easy। तो उस केस में they will share you at least। Now you will decide, you will try to explore। It is called explorating testing। एक टेस्टिंग आप, have you heard about this? किसी को पता है? एक एक्सप्लोर उस टेस्टिंग में क्या होता है? We don't know, have anything, we don't have any document। हमको एक एप्लीकेशन का URL मिलता है, we log in and it's random, do anything and we explore it। And while exploring we find out, okay, this is working in this way, this is working in this way, according to our domain knowledge we try to find out some bugs। No, it should work in this way। Yes or no? So same thing we have to apply here। Getting my point? But don't worry, that is not the 100% scenario। Most of the time if you will say and you are working in a good organization, they will share you the document। Is it okay? Yeah. Okay. In this document you will see, like my case, it is defined that this is your sample request and your sample reference is something like, so when you got this thing, oh, my sample reference is something like this, so I can match, okay, this data should be appear in my case also। Yes or no? And if it is something deviated, like student added is missing, student successfully with below, so we can make a, this is my expectation and this is the actual। Getting my point? So Pradeep, when we are developing the API, so this request and response also we have to develop it separately, right? No। In the API, automatically. In this API, within the code, it is decided that what type of the structure you have for this operation, Okay, and what okay. type of structure. So it is decided. And in the last session, I've already shown you that I have developed. So I can show you in case of SOAP, this is the application. I can show you that I have modified the code so that it can give you the, let me show you. So you can see this is the code of the SL. You don't need to understand it, but for your purpose, because you asked me a question that Pradeep, who decide that what is the structure of the request, what is the response? So you can say it is totally decided by this one। Are you able to see? This is my add string। You are able to see how many parameter it is passing here: name, age, subject। Yes or no? And what is the name of operation? Add। And same, you can see same 3 parameters are available here। Yes or no? Yes. Getting my point? So you can see that is totally developed by the, so developer, and how developer decide that 3 parameters will be there? Because he has a development document, he has a
requirement document for that. Getting my point? तो आपकी जो टेस्टिंग स्टार्ट होती है स्टार्ट फ्रॉम हियर. अब आपकी टेस्टिंग, हाउ यू स्टार्ट द टेस्टिंग, your testing starts from here, that you put the URL, then you got the operations and you start testing. Like how you test it manually, when I'm passing the name, age, J meter, subject, record should be inserted in the database, and you should get the message something like that which contains the ID also. Yes or no? This is your test case, one test case. Getting my point? Yes. And you know that you can also decide number of test cases, like age should be only the numeric. Yes or no? So you can try that if you are Yes. passing any alphanumeric thing, so it is working or not. Getting my point? You can see here, I pass some age and try to run it. So this is the standard test case. Nobody is going to tell you. Maybe it is defined in the document, but you know that that is called the experience of a tester, that age cannot be alphanumeric. I'm saying the right or wrong? Right. ठीक है, तो हमें ऐसे करना पड़ता है. Always we have to do. Now I will click on that. You will see right side it is giving some error. You can see it is giving some error. It is not giving any response because our expected response is in this format. Are we getting the response in this format? No. My test case is failed. Getting my So point? we can configure the response also, right? Validating the input like No, this no, is an no. alphabet Again, or no. No. Again, I'm saying that request is totally decided by you, but what response will come, it is actually coming from the API. तो API भेज रही है आपको रिस्पॉन्स. अगर आपने गलत डेटा भेजा तो वहां से एरर भी आ सकता है, प्रॉपर रिस्पॉन्स क्या तो प्रॉपर रिस्पॉन्स आ सकता है. हम ये जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स है हम नहीं कर रहे हैं, दैट इज ऑलरेडी रिटन इन द कोड. किसका स्ट्रक्चर क्या होगा जब आप रिक्वेस्ट भेजोगे Correct, तो क्या correct. होगा. So we can define that response in the code also, right? In the API. I have defined it. You can see whenever you are calling this API, actually whenever you call this API, चलो एक आपको चीज बताते हैं, maybe you guys are little bit confused. जब आप इसको हिट करते हो ना, जब API का ग्रीन बटन करते हो तो ये ऑपरेशन हिट होके कहाँ कंट्रोल जाता है, API के इस फंक्शन के पास. गेटिंग माय पॉइंट? और API के फंक्शन में आप जो पैरामीटर देख रहे हो, इसमें पैरामीटर में वैल्यू अपने आप कहाँ से आती है, whatever value you have passed in this structure, नेम, ये सब जो भी आपने पास किए वो कहाँ सेट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली इन दिस पैरामीटर्स. हो गया, मिल गया. And within this Actually, my function, question was about the validation. Like in the API, we can do the validation, right, and give the response. Like this is हाँ, a text, or this is a yes, error, or this is a number. yes, that's why I'm saying that that is the part of Yeah. the you. That is actually the thing is that you will see you can raise a bug here that when I put the age in the alphanumeric, I'm getting the wrong response. It means there is some bug in the API. Yes or no? Yes, that will depend upon the API documentation provided, the requirement Yes. documentation. So you will say that in this case, what is happening? Suppose the thing is that you are passing alphanumeric, you should not get the response in this way. You should get some proper error message that you are providing the age in alphanumeric format. Yes or no? But where you will get this information? किसने लिखा होगा? कहीं तो लिखा होगा ना कि ऐसा आना चाहिए. Getting my point? Yes, API में, correct. And in the base of that you are going to log a bug. आप देखो, अब जैसे मुझसे कोई बोलेगा तो मैं एक bug log करूंगा कि भाई when I pass the age in the alphanumeric, why I'm getting this thing? Because it is not understandable by a end user. You should give the some proper response. तो वो जाएगा और चेक करेगा कि देखो एरर के केस में जब एरर आ रही है, I have not written anything. I have written only one thing कि आपको जब भी कभी प्रॉब्लम होती है you are get this message. और इस केस में तो हमें वो भी मैसेज नहीं आ रहा. यस और नो? फेलियर, सॉरी, अनेबल टू ऐड दिस स्टूडेंट, हमको ये भी नहीं मिला. सो इट इज अ ब्लंडर. ये तो बहुत बड़ा बग है. गेटिंग माय पॉइंट? Maybe this is only for the post. We are using the get currently. For the get, you have not defined this error. No. Again, the thing is Nothing like that one by one. I'm telling you everything that in the SoapUI API, you don't need to choose any method type. Reason is that correct, default, URL based. but This is because soap, the right. thing is that by default it use post method. इसमें अगर आप देखोगे आपको चूज करने का मौका क्यों नहीं देता है? बिकॉज आपको नहीं चूज करना. बाय डिफॉल्ट इट इज इंप्लीमेंटेड दैट दिस इज द ड्रॉबैक और यू कैन से लिमिटेशन ऑफ द सोप बेस्ड एपीआई. इट यूजेस पोस्ट मेथड. इफ यू क्लिक ऑन रॉ मैप यू विल सी जब आप इस डॉक्यूमेंट को यहाँ पे इस रिक्वेस्ट को भेजते हो, सो इन द बिहाइंड द सीन इट क्रिएट्स अ HTTP स्ट्रक्चर. जब भी कोई रिक्वेस्ट, whenever you try to hit any request for the internet बिना HTTP प्रोटोकॉल के, it is not possible. So how it creates the structure? If you go to the raw tab, आपको दिख रहा होगा ये आपका स्ट्रक्चर है ना, इसके ऊपर ये देखो जो भी दिख रहा है, that is also part of a HTTP header. This is called the part of HTTP header. इसके अंदर सबसे पहला क्या लिखा है? पोस्ट.
इसने पोस्ट क्यों लिखा है? एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द इंटरव्यू, दैट इन द सोप बेस्ड एपीआई बाय डिफॉल्ट इट यूज्ड पोस्ट मेथड। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप नहीं चूज करते हो। जिसने जब सोप को डेवलप करते वक्त जो इम्प्लीमेंटेशन है इम्प्लीमेंट किया, दैट इज ओनली पॉसिबल पोस्ट। इन SoapUI ओनली द पॉसिबल ऑपरेशन और पॉसिबल मेथड इज पोस्ट, केवल पोस्ट ही है। इसीलिए तो उसने SoapUI ने आपको ऑप्शन ही नहीं दिया चूज करने का। उसने बोला जब पोस्ट है तो बिहाइंड द सीन इट इज ऑटोमेटिकली यूजिंग पोस्ट। if it is defined as get, it will use as get. It is based on the implementation, how it is implemented. So you don't have an option to choose it. Getting my point? And in my document also you can see there is no flexibility. It is not giving you that you have to share, you have to select. But in case of REST, आप देख रहे हो, आपको बोल रहा है आपको you have to choose the method. Getting my point? So this is the first difference in the SOAP based and REST API. SOAP based API by default uses the post method. Second thing, SOAP based API, second limitation is that SOAP based API always use XML format. यहाँ पे आपने देखा कि ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है इनपुट का किसमें बन रहा है? XML का फॉर्मेट है। जबकि रेस्ट में यू हैव ए फ्लेक्सिबिलिटी कि जिसने डेवलप किया है वो चाहे तो सोप में भी उसे XML फॉर्मेट में भी करा सकता है और JSON। गेटिंग माय पॉइंट? तो इफ एनीबॉडी इज यूजिंग द सोप बेस्ड एपीआई, सो उसमें स्ट्रक्चर द सपोर्टेड लैंग्वेज विल बी XML. Second important difference. And in the rest, the developer can implement in the XML format as well as JSON. तो उसमें दोनों सपोर्ट करता है। इसमें डेवलपर के पास कोई ऑप्शन नहीं है, पोस्ट मेथड होगा ही, XML में ही करना पड़ेगा। बट इन द REST based API we can choose any method. First thing, we can choose any data format. वो डेवलपर को अगर लगता है कि मेरे को JSON में बनाना चाहिए तो JSON में बनाएगा, इफ यू वांट इन द XML फॉर्मेट वो उसमें बनाएगा, और उसका मन करता है कि यार रिक्वायरमेंट ये है कि दोनों में सपोर्ट करें, सो इट विल सपोर्ट इन बोथ। इज इट ओके? So Pradeep, if REST service is using the XML, then we can define the get, post, or no. We can define still, right? We if it is a REST service. We can define. That's why I'm saying that. Only the thing is that this difference is very very clear. So based post is fixed. REST based method is you have to choose. Getting decided on the basis of implementation. जैसा उसका implementation किया गया है आपको वैसा choose करना पड़ेगा। पोस्ट में SoapUI में this problem is resolved. आपको choose ही नहीं करना है क्योंकि बना भी पोस्ट में है, तो by default tool भी किसमें प्रोवाइड करता है? पोस्ट। सेकंड, आपको इन द सोप बेस्ड API बाय डिफॉल्ट स्ट्रक्चर इज XML, तो आपको कहीं पे भी इसने बोला कि आप XML चूज करो, बाय डिफॉल्ट क्या रिक्वेस्ट बनी? इन द फॉर्म ऑफ XML। रेस्ट में आपको ये डायरेक्ट नहीं देगा, आपसे एक ड्रॉप डाउन देगा आपको, एंड इट लेट मी शो यू वन थिंग, लेट मी शो यू डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ यू, आपको दिखाई देता हूँ। ये मैंने सोप प्रोजेक्ट बनाया, देन आई एम क्रिएटिंग अ रेस्ट प्रोजेक्ट, देन विल कम टू द टेस्टिंग। नाउ फर्स्ट थिंग टेल मी, इन द रेस्ट प्रोजेक्ट व्हाट इज द इनपुट इट इज एक्सपेक्टिंग? क्या इनपुट कर रहा है? मैं एक रेस्ट प्रोजेक्ट बना, URL, यहाँ पे विजडल नहीं एक्सपेक्ट कर रहा है, बिकॉज रेस्ट इज ऑलवेज डिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ URL। गेटिंग माय पॉइंट? करेक्ट। इसमें क्या होता है, एवरी ऑपरेशन इज ट्रीटेड एज ए सेपरेट URL। या प्राची टेल मी। नहीं, मेरा क्वेश्चन यही था कि मतलब फिर सारे URL का एक अलग अलग वो बनाना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, that's why to overcome this problem a new concept is introduced which you told me, that is called Swagger। ठीक है, Swagger में क्या किया गया, इन सारे URL को लेके जैसे विजडल का एक डॉक्यूमेंट बना है, they have created XML document, and what is the other benefit of Swagger? You don't need any type of UI। आपको कोई यहाँ पे UI ही नहीं चाहिए, आपको कोई टूल नहीं चाहिए। Swagger itself create a UI for you। Getting my point? Swagger आपके लिए एक UI बना देता है। Swagger आपके लिए UI बनाता है which contains कि ये URL है, इसमें एक टेक्स्ट फील्ड बनेगी जिसमें इनपुट। So Swagger is actually something like that which contains XML document which contains all the information as well as it creates a UI for you। Getting my point? Yes, there you can select the method, get, post, whatever. Yes, so like we can fetch everything from there. Like, can we do that? Yes, everything you can do. That's why I'm saying that कि अगर आपको Swagger की API, Swagger को implement किया गया है, so then you don't need any tool for that. Swagger itself is a you can say self-explained UI. लेकिन अगर Swagger नहीं है, then you need a tool. क्योंकि अगर Swagger नहीं है, then you have to configure it manually one by one. Getting my point? अगर Swagger होता तो आपको, अगर Swagger होता तो Swagger का let me show you कि Swagger क्या करता है। जैसे आपको you can take the example, यहाँ पे कुछ आपको UI मिल रहा है ना,
देखो ऐड हाँ। स्टूडेंट दिख रहा है, रिक्वेस्ट का एक फॉर्मेट बना दिया है। स्वेगर क्या करता है इसके लिए अपना क्या करता है, दे क्रिएट्स अ सिंपल वेब एप्लीकेशन यूआई। मतलब आपको एक कैसे ऑपरेशन कॉल करने हैं, मेथड चूज करना है, इन सब के लिए क्या बना देता है वो, एक यूआई बना देता है। दैट इज द यस। गुड। तो आपके हाँ। लिए ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। चैलेंज वहां आता है जहां पे एपीआई तो है, रेस्ट एपीआईज आर देयर, बट देयर इज नो स्वेगर। तो मैं आपको स्वेगर का एग्जांपल दिखाऊंगा। स्वेगर So Swagger इमेज, is just a web-based tool, right? Like SoapUI. यस यू कैन से स्वेगर। आपको देखो It बहुत is अच्छा not a एग्जांपल दिखा, server. It is not आ, a web आप server, right? देखो, आपको दिखाता भी हूँ। इस इमेज को थोड़ा मैं लार्ज करता हूँ, इसको आपको बेस्ट एग्जांपल। अब देखो दिस स्वैगर इज एक्चुअली शो यू यूआरएल इन दिस। अब देखो यहाँ पे आपको सारे एपीआई दिख रहा है। अगर मेरे राइट साइड स्क्रीन देखो, पोस्ट पुट गेट दिख रहा है, हाँ। राइट। इसमें कहीं पे भी आपको, अगर कोई बड़ी इमेज होती तो और दिखाता। ये देखो थोड़ी और क्लियर है। यहाँ पे देखो, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, आपको कुछ करना ही नहीं है। आप अगर इस पोस्ट पे आप इस एपीआई को कॉल करना चाहते हो, जस्ट क्लिक ऑन दिस ऑप्शन। ये अपने आप किसको लेके दिखा रही है कि मैं पोस्ट यूज करूंगा। यूआरएल अपने आप कॉन्फ़िगर है। आपको केवल क्या पास करना है बताऊं, ओनली द डेटा पैरामीटर। या। पैरामीटर। लाइक ये पैरामीटर पास करो, यू हैव टू पास दिस डेटा। अगर इस डेटा को भी पास करना है तो आपको वहां पे स्वैगर ये भी बताता है, उसी डॉक्यूमेंट में यूआई में आपको एक सैंपल दिखाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ स्वैगर। अगर आपके पास स्वैगर है, यू डोंट नीड एनी टूल फॉर दैट। गेटिंग माय पॉइंट? प्रदीप, when you say Yes, you yes. don't need any tool for that, like do you mean कि अगर मैं ऑटोमेट करना चाह रही हूँ तो उसकी जरूरत नहीं है, और you mean कि नहीं मेरे नहीं को नहीं नहीं, सोप इन यूआई नहीं चाहिए? no, if you want to automate in that case, now the thing is that because swagger is exposed as a web url, एक ये वेब का url ही तो होता है। हाँ जी। तो हाँ। इसको तो आप सेलेनियम की हेल्प से ऑटोमेट कर सकते हो। यस और नो? अरे यही तो करना है, पोस्ट पे क्लिक करो, कुछ डालो, एंटर करो, बिकॉज दिस इज जस्ट लाइक ए यूआई। जिसको कॉल करना है उसके क्लिक करो, उसमें डेटा डालो एंड जस्ट क्लिक ऑन द एग्जीक्यूट। यस और नो? Correct, correct. तो आप ये सब काम, अगर आपको मैंने वेब यूआरएल के फॉर्म में आपको एपीआई एक स्वैगर के फॉर्म में, एक वेब एप्लीकेशन के फॉर्म में दे दिया, तो आपको इस पे तो सिलेनियम ही ऑटोमेट कर देगा। प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। यस और नो? Yes, yes, correct. तो आपकी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। तो आपको किसी टूल पे जाने की जरूरत नहीं। अगर स्वैगर इज नॉट डिफाइंड देयर, द पर्पस ऑफ स्वैगर दिस वन, द पर्पस ऑफ स्वैगर वाज टू मेक योर लाइफ इजी। जब क्लाइंट एपीआई को यूज करता था तो क्लाइंट से आप क्या बोलोगे, ये स्वैगर एक्चुअली जानते हो किसके लिए बना था? फॉर क्लाइंट। क्योंकि क्लाइंट जब एपीआई को यूज करता था एंड दे वांट टू यूज द एपीआई इंडिविजुअली विदाउट एनी इंटीग्रेशन। उन्होंने अमेजॉन, मान लो क्या अमेजॉन में एक एपीआई यूज होती है, वो अमेजॉन में इंटीग्रेटेड यूज नहीं करना चाहते, वो उसको स्टैंड अलोन यूज करना चाहते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो स्टैंड अलोन Yes. यूज कैसे करेंगे? तो वो क्लाइंट को आप क्या बोलोगे, आप उनसे बोलते हैं कि एक काम करो, सोपीआई टूल खोलना और उसमें ही यूआरएल डालना, इसमें वो कहते हैं यार आई एम नॉट ए टेक्निकल गाय, आई एम नॉट ए टेक। तो उनके लिए बनाया गया स्वैगर, कि स्वैगर में सब कुछ यूआई, उनके लिए स्वैगर का यूआई जो यूआई दिख रहा है, दिस इज आल्सो लाइक ए वेब एप्लीकेशन। यस और नो? Yes, yes. तो उनकी लाइफ को आसान, अगर आपकी कंपनी में स्वैगर है तो स्वैगर की टेस्टिंग करने के लिए, एक्चुअली स्वैगर टेस्टिंग हमारी टेस्टिंग के लिए नहीं बना है, स्वैगर बना था क्लाइंट के लिए। हमें तो बेनिफिट क्या होता है, अगर स्वैगर क्लाइंट को देंगे तो हम भी स्वैगर से ही टेस्ट कर लेंगे, है कि नहीं? हाँ और अगर प्रदीप, स्वैगर, यूज तो यही होता है, मतलब यही टूल यूज हो रहा है। सो दैट इज टोटली डिपेंड, हर जगह ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगर स्वैगर हो रहा है तो आपकी लाइफ बहुत आसान है। मैं बता रहा हूँ, आपकी लाइफ बहुत आसान है। इसमें टेस्टिंग कैसे होगी, ये स्वैगर के लिंक पे क्लिक करना, इफ यू हैव ए स्वैगर यू कैन शेयर मी, मैं आपको आपके, आप मुझे अपने सिस्टम को शेयर करना है, स्क्रीन में आपको दिखाऊंगा कैसे टेस्टिंग करते हैं। बहुत आसान है ये तो, जस्ट लाइक ऐसे जैसे एप्लीकेशन पे आप क्लिक कर रहे हो, बहुत आसान है, बहुत इजीएस्ट वे। दैट्स व्हाई इट इज शेयर टू द क्लाइंट। क्लाइंट एक नॉन टेक्निकल गाय होता है, उसको बनाई इसलिए गया, तो आप समझ सकते हो। ठीक है, इफ यू डोंट हैव द स्वैगर, दैट इज द चैलेंज, एंड बिकॉज दैट्स द थिंग इज दैट स्वैगर क्लाइंट के लिए बनाया गया है, तो अगर कोई मैंडेटरी नहीं होता कि आप स्वैगर बना के दो। अगर आपके आपके उसमें लिखा है उसने स्वैगर दो क्लाइंट, तो आप स्वैगर देते हो। हम यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ माय ओन कंपनी। प्रीवियसली व्हेन आई वाज इन अ कंपनी, दे डोंट क्रिएट द स्वैगर इन द स्टार्टिंग। उन्होंने ऐसे एपीआई के, आफ्टर सम टाइम दे गॉट द रिक्वेस्ट की जो आपका क्लाइंट है, दे वांट टू यूज द एपीआई स्टैंड अलोन, मतलब उसे एप्लीकेशन से मतलब नहीं है, वो अलग से एपीआई कॉल करना चाहते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो उनको उन्होंने बोला वी नीड अ यूआई फॉर दैट, एंड द सॉल्यूशन वाज स्वैगर। ठीक है? So Pradeep, one question like if I want to, for example, if we want to test our internal services, right, using the Swagger, so how do we have to configure it, right, on the Swagger Right, or how is it? you have to ask your developer to create a swagger document.
ये Swagger डॉक्यूमेंट डेवलपर, क्योंकि देखो इनडायरेक्टली इट इज आल्सो लाइक ए यूआई डेवलपमेंट। भाई आपकी यूआई तो एक वेब एप्लीकेशन ही तो बन रही है छोटी सी, तो अच्छा, इट इज, हाँ जी, तो इट इज क्रिएटेड बाय द so to डेवलपर। implement it on Swagger. Yes, Okay. Swagger is the concept. Swagger is the, you can say, concept which is used to develop this. Getting my तो point? डायरेक्ट URL डाल के हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते Swagger पे, you have to implement the API on Swagger, correct? अगर आपको Swagger पे करना है, नहीं तो देखो अगर इस API को यहाँ नहीं करते, अगर मैं Swagger बना दूं तो आपको ये मेरी सारी URL जो दिख रहे हैं रेस्ट के, ये भी कैसे दिखेंगे? ऐसे ही दिखेंगे, ऐसे ही दिखेंगे। आपको एक वहां पे ऐसा यू विल गेट ए टेक्स्ट फील्ड जहाँ पे लिखा होगा डिलीट, जहाँ पे पोस्ट लिखा है ना, यहाँ पे ये पोस्ट दिख रहा है ना आपको, पोस्ट पुट, इसकी जगह क्या दिखेगा आपको? ये मेरे मेथड दिखने शुरू हो जाएंगे, डिलीट। और इसके बगल में यू विल एबल टू सी, आपको एक यूआरएल का दिख रहा है ना, /pet ऐड समथिंग लाइक, इसकी जगह यूआरएल आपको ये दिखने लगेगा। तो इसका मेरे केस में वी हैव नॉट क्रिएटेड द Swagger फॉर दिस डॉक्यूमेंट। आप अगर इसका Swagger बना लोगे तो है, अगर Swagger नहीं बनाया तो मैं कैसे टेस्ट करूंगा? आई शो यू वन बाय वन, यू विल कॉन्फ़िगर इट। पहले इसको कॉपी करोगे, यू हैव ऑलरेडी रिटन न्यू रेस्ट प्रोजेक्ट, पेस्ट करना है यहाँ पे एंड क्लिक ऑन ओके। जब आप क्लिक ऑन ओके करोगे, लेफ्ट साइड इट विल क्रिएट अ प्रोजेक्ट, जस्ट सी। अगर आप ध्यान से देखो तो इसने लेफ्ट साइड में इट क्रिएटेड दिस प्रोजेक्ट, रेस्ट प्रोजेक्ट 2। यहाँ पे इट इज द थिंग इज दैट यू हैव टू गिव अ रीनेम। बाय डिफॉल्ट इसका नाम क्या था? इट इज यू कैन से drawback of a SoapUI that whenever you pass a URL, it don't ask for the project name and by default give the name REST project, और आप इसको रीनेम कर दो। Getting my point? I can take the example. I can take the example of PRACHI, Prachi REST project. Are you getting my point? Now in this URL you will see, in this you will see you have configured only one URL, so that's why you are able to see this one URL. Are you able to see? देखो आपको एक URL दिख रहा है यहाँ पे, ये आपका URL था, yes or no? ये देखो पूरा दिखा रहा है। Yes, yes. Okay, this is the URL and you want to see the right side, तो right side में देखो by default whatever URL put it in, it is showing the URL here. ये URL दिख रहा है and by default it has given you the method get. लेकिन ये get आपको ऐसे नहीं बोला कि get आपको get ही यूज करना है, it is giving you a drop down। आपसे पूछ रहा है कि इस URL को तो मैंने आपको शो कर दिया, लेकिन you want to call this URL with which method? अगर आपको if you want to call the get all student API, अगर आपको get all student करना है तो मेथड चूज कर लो get। अगर आपको create student चूज करना है तो URL सेम है, मेथड क्या चूज कर लो? तो URL यहाँ पे आपको डिसाइड करना है, लेकिन डिसाइड कैसे करना है आपको पता होना चाहिए किसके साथ क्या सपोर्ट करता है। नाउ यू कैन सी anything else you need to require to configure for a get all student नहीं, आपको URL देना था, get देना था, कोई पैरामीटर नहीं देना था। Your work is done. Simply click on red button, green button. You will see all the records you will get at the right side. देखना, are you able to see? देखो सारे रिकॉर्ड आ गए। और अगर मैं यहाँ पे if I use post method, तो आपको क्या करना पड़ेगा? Then it will give you the other requirement documents. अगर आपको post यूज किया तो post में URL दे दिया, post दे दिया, एक डेटा भी एक्सेप्ट कर रहा है, yes or no? ये भी देना है। So it is configured by you. Little bit clear? I understand that is a new thing for everybody, but little bit clear? अच्छा बाकी लोग नहीं बोल रहे हैं। Yes. दीपक you are getting? दीपक, हर्षिता, निवेदा, रश्मि? Little bit, yes. Like I request you guys to document this so that I can understand clearly. No, so come again, I didn't get you. I mean, some people are asking questions in Hindi which I'm not understanding. So, Okay. Sir, Pradeep, can you start step by step because we are not getting. Yes. So this is, I have shown you this thing. Okay, so let me start properly. So now the thing is that, because the thing is that every time when I will try to show you something like that and I'm not going in the proper way, you will ask the question, why this? Okay, so again, I'm going in the start way. You will get this, in case of SOAP, you will get this document visible. Copy this URL and go to your SoapUI and simply say file, new SOAP project. You have to paste the URL here and you have to choose, I have to paste this one. Let me copy this, not copy it. So you will copy this URL and here you will paste it. When you paste it here, in the project name section, you have to choose any name. So here, this time I'm choosing
17th batch, 17th batch soap service. Is it okay? Yes. So now you have given the project name, you have URL. Now click on OK. It will show you the project. You are able to see इसने project create कर दिया. It has shown you the project and all the operations are there. Now how you can test the operation? One by one you have to test it. First of all, I will tell you how you can test it manually. Manually कैसे test करते हैं? I will take the example of get all students. So it will show you the operation. It will show you the sample request. ये simple request आपको दिखा रहा है, देखो यहाँ पे. तो आपको कुछ भी नहीं करना. SOAP is very easy to test. You will see in this structure, are you able to see any parameter to pass? कोई parameter दिख रहा है pass करने को? नहीं. दिख रहा है कोई? And you can check it with your document also. You can check here. Where is get all student? Let me show you. Okay, get all student is not here. So in this in case of get all student, you will see this is the expected request and it is not expecting any parameter. It is written in the document. Now you have to run, click on this one. You will be able to see the response at the right side. Are you able to see? Deepak, Niveda, Yes, are you able yes. to see response? Yes, Pradeep. And you will see the response is coming in the XML format. If you scroll it, you will see all the record because my database contains so many records are there. So that's why you're able to see so many. So now what is the testing? What type of testing you have to perform? The first test case, because this is a get all student. This is the operation for get all student. So it means it should return all the records of the student which is available in the database. Yes or no? Getting my point? Yes or no? Yes. So with the help of API, it should return all the records. Up here you can say one record is represented by this one. So it means this number of this student structure should be number of records in the database. तो आपको ये क्या validate करना है कि जितने इसमें student के जितने भी record थे database में वो यहाँ दिखने चाहिए. How you can verify manually? आप database को open कर सकते हो. Yes or no? Go and open your database, your company database, click on connect, and here you will make a query. क्या query होती है किसी database से record निकालने की? Anybody tell me? Select start from the table name. Select count bracket star. I got it. I got it. Select count. Tell me. Select count From the table name. from. So my table name is student. So I will write. So this is right query. Yes. So how many records we are getting? 2915. So it means if my API is working properly, so number of record written by this API, this should be 2915. Yes or no? Yes or no? Yes, yes. So 2915, what you have to check? We have to check that this tag should be repeated. ये एक student का record का structure है ना? Student, then it contains the child age, ID, name, subject. So this is representing one student record. So it means this structure should be repeated 2915 times. Yes or no? Yes. तो हम कैसे टेस्ट करें? अब मैनुअली तो थोड़ा टफ है. कैसे टेस्ट करोगे? आप तो ये करोगे, काम करते हैं, लेट मी कॉपी एंड पेस्ट इन ए नोटपैड और फिर काउंट करो 1 2 3. इट इज टफ फॉर यू, यस और नो? Yes. लेकिन मैनुअली तो ऐसे ही करना पड़ेगा. तो एक चीज है, दिस थिंग इज दैट tool has resolved कि tool में there are few options that if you want to do this type of validation in your response, you can do it. I will show you that thing. Is it okay? ठीक है, चलिए. So you have done this thing. Now test other type of operations that are easy to test. Now take the example of get student by ID. Just click on that. Are you able to see the sample request? Niveda, you are able to see the sample request? Yes, Pradeep. Okay. So now the thing is that every time you will see that it is showing you the option in the form. So form option is only available in the pro version. When you will test your API in the free version of the SoapUI, you will only able to see 3 tabs: XML, raw, and outline. So my advice is that always use the XML or JSON. If your API support XML, use XML tag, and your API support JSON, use JSON tag. Forms you should not use because it is just like a UI, and you should not use the API for your testing.
So how many parameters is telling? ID. So now anybody can tell me, automatically anybody can tell me, what should be the use of get student by ID operation? What is the use of that? To give the detail of a particular student. Particular, like a unique record kind of, right? Yes. Yeah. For example, from this database, you can test it. I want to get the record for the ID, suppose 2900. 2900. So I will put the ID 2900 and let's click on this one. So you are doing it manually. Right side, you are getting the response, click on XML tab. So you are getting the response and you can verify it. How you can verify? Just check detail is coming right or not. So for the ID 9, what is the name of the student? Kiran. Yes or no? We'll have to check, no? So you have to check that it is giving the right detail of the node. So how you can verify that API is working fine? Go to the database and like a query, select star from student where ID it is equals to ID 2900. Very good. Everybody has given the right answer, that select star from student where ID equal to 2900. So whatever I'm getting from the database, that should be written by the API. Dekho, ID 290 Kiran, age 22 Jmeter. Same I'm getting in the SoapUI. Yes or no? Yep. So we are doing it from the validation perspective. That's why we are checking response here and as well in the database. अगर हम टेस्ट करेंगे तो क्लाइंट थोड़ा ऐसा करेगा. क्लाइंट को तो हमने बता दिया टेस्टिंग सही चल रही है, तो ये मानेगा कि जो डिटेल आ रही है that is fine. That's why we are doing the testing for that. Yes or no? Is it okay? Yeah. तो हम टेस्टिंग क्यों कर रहे हैं? हमने टेस्टिंग के कैसे वैलिडेशन किया कि this is your response and this what is your expected data. Your expected data is coming from the database. आपका expected data है for the ID 2900. Name should be written Kiran, age should be 22 and subject is Jmeter. You will check it here and go and manually verify in your response. Clear हो गया? In this way you can make a validation. Getting my point? So is it like, Pradeep, it's manual or it's automation? Like, so first of all, I'm telling you that how you can make it manual. Then I will show you that how you can make your automation. So this is the manual testing that you can achieve in any tool. Now you can see, I'm telling you that which type of test cases you should consider. Now the thing is that it is also a test case that whenever you are providing a data ID in the input, in the request, how many fields you are getting in the response. अच्छा, आपको कैसे लगता है कि age, ID, name and subject, when we are getting this 4 field in the response, my response is proper. Maybe client has given a request that address should also be coming in the response. हो सकता है कि नहीं हो सकता है? भाई अगर मैंने किसी का आईडी दी है और मेरा इंटरेस्ट ये भी हो सकता है ना कि रिस्पॉन्स में क्लाइंट ने बोला कि आपको दे शुड रिटर्न द एज, आईडी, नेम, सब्जेक्ट एंड एड्रेस. तो आप ये मत बोलना मेरा टेस्ट केस पास है. टेस्ट केस तो अभी फेल है. भले मुझे वी गॉट द रिस्पॉन्स बट रिस्पॉन्स इज नॉट कंप्लीट. यस और नो? yes. I can give you the another scenario. Yes. In some cases, it can give you the more information. That is also a, you can say, negative test case. Take the example. Suppose take the example and it is returning the, you can say, detail of the student. And maybe by mistake, it is returning the password data. And it is not expected in the response कि कोई अपना ID की डिटेल निकाले तो किसी की पासवर्ड मत देना उसको. Getting my point? क्योंकि पासवर्ड एक सेंसिटिव है. तो अगर इसने पासवर्ड दे दिया एक एक्स्ट्रा फील्ड, that is also a test case fail. Yes or no? Are you getting my point? Yes. Yes. Data only. What is the validation? होता क्या? What is the validation? What is I am expecting? If you are giving more than that, that is fail. Less than that, that is fail. It should be proper. Yes or no? Yes. है ना? आप ये थोड़ा बोलोगे कि चलो यहाँ पे ऐसा थोड़ा हुआ कि 3 प्रोडक्ट के साथ एक प्रोडक्ट फ्री मिल गया तो हम खुश हैं. नहीं, एपीआई में तो कुछ भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया, दैट इज नॉट इन सिंक विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट. क्लाइंट बोलेगा मेरी एपीआई की हेल्प से आई हैव गिवन द एक्सेस ऑफ एवरी माय, यू कैन से टेक द एग्जांपल ऑफ अमेज़न कि अमेज़न ने बोला कि मैं एक एपीआई दे रहा हूं, आई एम गिविंग द एक्सेस ऑफ दिस एपीआई टू गेट द डिटेल ऑफ एनी माय यूजर. बट यू आर प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन कि आपके प्रोडक्ट की और इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा दे रहे हो, तो बोलेगा मैंने ये तो बोला ही नहीं था, आपका रिस्पॉन्स क्यों ज्यादा दे रहे हो. और अगर आप कम दोगे देन यू विल से कि एटलीस्ट यू शुड प्रोवाइड द डिटेल कि नाम क्या है, एड्रेस क्या है, आपने वो भी नहीं दी. सो इन द बोथ केसेस व्हेनेवर यू आर गेटिंग द रिस्पॉन्स,
you have to make sure all the field, expected field should be there. पहले field का validation होना चाहिए, and when field is there, then you should go with the value. Yes or no? आप क्या validate करोगे? Yes. ID के in this request against the ID in the response we should get 4 fields. ये लिखा होना चाहिए डॉक्यूमेंट में, age, ID, name, subject. ये 4 जब टैग आएंगे, when these 4 tags भी available, तब मैं वेरीफाई करूंगा कि ID की वैल्यू सही है, age की वैल्यू सही है, name की वैल्यू सही है. Getting my point? This is called validation. Is it okay? Yes. You can take the example also. I will ask, and I'm sure that most of the person will give the wrong answer. आपके पास एक login page है. In the web application, you have a login page. What should be the fastest case? क्या fastest case होना चाहिए आपका? कोई बताएगा? URL should be correct. URL should be correct. Okay. Now, what is the second one? Page should load. Page should load. Yeah, third one. Yeah, third one. No, it's okay. Username field should be available. Password field should be available. Yes. Then, Yes, this is the first one. And somebody else was also. Deepak was saying that thing. Same thing. Yeah. Yes. Yeah. So right, Deepak. This is the thing that whenever you are going to test, what is the requirement? You are going to test a login functionality. Username field is not there. Password field is not there. Login button is there. You will test that. What is the valid data? No, you are not able to enter data if any one of is missing. Yes or no? Yes. So what is Correct. your first test case? First, every time in the UI, the first test case is called the components of the functionality should be available. Username field होना चाहिए वहां पे, दिखना चाहिए, editable होना चाहिए, password field दिखना चाहिए, editable होना चाहिए, तभी तो मैं डालूंगा. लॉगिन का बटन दिखना चाहिए और वो क्लिकेबल होना चाहिए. अगर इसमें से तीनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, मैं अपनी टेस्टिंग आगे करूंगा ही नहीं. We are not able to do. Yes or no? Rashmi, Yes, yes. Prachi, Yes. Deepak, everybody agree? Yes or no? Yes. Yes. तो यहाँ पे भी I have done the same thing. अगर मेरे रेस्पॉन्स में मेरी एक्सपेक्टेड फील्ड ही नहीं आ रही है, तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से पहला फेल हो गया. तो मुझे चेक करना है कि माई दिस यहाँ पे इन केस ऑफ यूआई, व्हेन यू एक्सपेक्ट, आपकी यूआई में जिनको आप टेक्स्ट फील्ड बोलते हो, यहाँ पे उसी को क्या बोलते हैं? टैग. दिस इज कॉल्ड एज टैग. This is called ID tag. So whatever you have wrapped between this opening age tag and this is called closing at tag, this is called its value. वहां पे आपको क्या दिखता है? टेक्स्ट फील्ड दिखती है, उसके अंदर वैल्यू होती है. Yes or no? Getting my point? Yes. तो यहाँ पे हमारी टेस्टिंग इस बेस पे होगी. Now I will take you the example of another manual testing. In the take the example of add student. Now you will see in the add student, when I will click on sample request, this is the benefit of the tool कि आप sample request when you click on XML, आपको खुद पता चल रहा है ना इसमें डेटा क्या क्या डालना है. So I have given an example. फिर से मैं टेस्ट करूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ, I will take the example like Murtaja. Then I will get some age 22. I'm taking the positive scenario. है ना, पहले positive scenario देख रहा हूँ. Negative scenario क्या होगा? In the age you will write alphanumeric, something like that. Now you have put some data. Now you will click on the run button. Click on the run button. You got the response at the right side. So now what is your validation? First validation. If you are putting some data in the add student operation, the first message should be there. There should be a result tag. And the value of result tag should be student added successfully. Getting my point? Yes or no? Yes. अगर ये मैसेज स्टूडेंट एडेड सक्सेसफुली ना आके कुछ भी आता है, सपोज इट इज कमिंग स्टूडेंट फेल्ड, तो क्या इसकी कोई वैल्यू रह गई? इसका मतलब तो ये एपीआई बहुत गड़बड़ तरीके से काम कर रही है. स्टूडेंट के रेस्पॉन्स में आ रहा है फेलियर और आईडी जनरेट हो रही है. सो द फर्स्ट वैलिडेशन शुड बी स्टूडेंट एडेड सक्सेसफुली मैसेज. व्हेन दिस मैसेज इज अवेलेबल, देन वी शुड चेक द created ID. Yes or no? Yes, because this is adding the student by ID. Yes. Some web service can be adding a student by name or by age also. Yes. It will return the name or age in the response. Yes, exactly. So अब देखो मैनुअल टेस्टिंग में आप कैसे वेरीफाई करोगे कि आपने whenever you try to call a add student operation, it created the name, age, subject. With these details, it created the record and the ID for record is 29.
आप यही तो करोगे. अगेन यू विल गो टू द डेटाबेस एंड मैन्युअली वेरीफाई कि जो आईडी मुझे रिटर्न हुई है क्या उससे कोई रिकॉर्ड बना भी है डेटाबेस में. एंड यू गेट द रिजल्ट मुर्तजा 22 सोप. यस और नो? यस और नो? Yes. Yes. तो देखो ये सारा वट एवर आई एम डूइंग इट मैनुअली. तो सब हम मैनुअली कर रहे हैं, बट स्टिल इन केस ऑफ मैनुअल इट इज हेल्पिंग अ लॉट. क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, आपके पास केवल एक विजडल था. अगर आपके पास टूल नहीं होता तो आप परेशान हो जाते. ठीक है, यू कांट So राइट. Pradeep, I have a doubt. Can we write multiple test cases also? Like you have added one posted one query, so it has been executed. Yeah, So like yes. So yeah, again I will come to that point. Same thing, because we are doing the manual testing. So what is the manual testing? Every time you have to add, you have to modify the data here. Like you want to add some test case, like in one test case you want to add some data here, Murtaja, the age 22. In the second test case, in the age you want to add the data in the age like TTTHH. So that is different data. Yes or no? yes. Yes, you can do it Yes. here. You can do it, but that is the part of your automation. क्योंकि मैनुअल में तो आप भी मुझे बताओ क्या करते हो. आपको अगर SoapUI के लॉगिन का देते तो आप क्या करते हैं? फर्स्ट टाइम यू राइट द राइट क्रेडेंशियल, देन यू अगेन लोड द पेज एंड राइट द रॉन्ग क्रेडेंशियल, देन डिफरेंट टाइप ऑफ. यस और नो? तो ऐसे ही यहाँ पे भी करेंगे. When we'll go to the automation, we will make it automated. Getting my point? Okay. चलिए. So anybody have any doubt कि हम कैसे करेंगे? तो ये हमारी मैनुअल टेस्टिंग हो गई. Now the question is that how we are going to automate it. तो ऑटोमेट के लिए ध्यान से देखना what you have to do. First of all, just collapse this. आपको ये जो आपने बाइंडिंग कर दी है, फाइल न्यू प्रोजेक्ट करके कर दिया, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको आप यहाँ कर दो collapse. ये आपका सिंपल मैनुअल टेस्टिंग है. Pradeep, Now, one question, one last question. Yeah. So this will in the post it will accept the duplicate records, that is again also decided by the API, right? yes, अगर Okay. again that decided by the API and it should be written in the document. अब देखो किसी किसी जगह क्या होता है, ID should be unique, but sometime maybe they can say that the name should be unique. हम एक ID के साथ, so who will tell you? आपका क्लाइंट बताएगा ना डेवलपर को कि my requirement is that ID should be unique and name should also be unique. And on the basis of you are going to write your test cases. अगर आपको बता रहा है कि ID unique होनी चाहिए, तभी आप ID unique होती है, that is one standard. I got it. लेकिन अगर आईडी स्टैंडर्ड क्लाइंट नहीं बोल रहा है तो आप उसको यूनिक मानोगे भी नहीं. यस और नो? Yes, yes. ठीक है ना. तो इट टोटली डिपेंड्स कि जैसा उसका डेवलपमेंट के लिए बोला जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट एक्चुअली डेवलपर डेवलप्स. और उसी के डेवलपमेंट पे तो आप टेस्ट केस करते हो. आप टेस्ट केस जो बनाते हो उसमें से मोस्टली टेस्ट केस यू राइट ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, क्योंकि उसने बताया रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट के हिसाब से. आप जो टेस्ट केस करते हो वो ऐसे टेस्ट केस होते हैं दे आर स्टैंडर्ड. आप क्लाइंट को सजेस्ट करोगे, क्लाइंट ने बोला एज, तो आप बोलोगे यार एज तो आपका स्टैंडर्ड है, कभी भी एज अल्फा न्यूमेरिक क्यों होगी. किसी भी इस वर्ल्ड की किसी भी कंट्री में कहीं पे एज को ये थोड़ा लिखते हैं कि XYZ. गेटिंग माय पॉइंट? Correct, correct. तो यहाँ पे स्टैंड आप उसे सजेस्ट कर सकते हो. अगर आपका क्लाइंट कहता है नहीं 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 हमारे यहाँ जो एज होती है हम उसको कोड के फॉर्मेट में लिखते हैं, X मतलब 30, Y मतलब 40 और Z मतलब, तो आप नाउ योर टेस्ट केस विल बी चेंज, योर डेटा विल बी एक्सपेक्टिंग द अल्फा न्यूमेरिकल्स. तो आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि मैं कन्वे क्या करना चाहता हूँ कि हम कुछ Yes, डिसाइड yes. नहीं करते हैं. डिसाइड तो ये करता है क्लाइंट को क्या चाहिए. अगर वो बोलता है कि दो नंबर का सम 2 + 3 5 होना चाहिए, तो आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट भी 5 होगा. अगर वो बोलता है नहीं 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 मेरे को एक काम करना है, मेरे को अपनी एप्लीकेशन में एक बग एक ऐसा कुछ करना है जिससे मैं कुछ करना चाहता हूँ, मेरा बिजनेस लॉजिक है कि 2 नंबर का सम हमेशा सम से एक ज्यादा है, तो क्या बोलेगा आपकी टेस्टिंग? व्हेन यू आर टेकिंग इनपुट 2 and 3 आंसर शुड बी 6. यस और नो? Yes, yes. तो आप आउटपुट जो है आप डिसाइड नहीं करते हो, हर बिजनेस डिसाइड करता है. तभी तो आप अगर सब कुछ स्टैंडर्ड होता तो एक ही कंपनी सारी टेस्टिंग एक ही तरीके से करती. यस और नो? बट टेस्टिंग इज डिसाइडेड बाय द डिपेंड ऑन द बिजनेस, डिपेंड ऑन द डोमेन एंड डिपेंड ऑन द टोटली बिजनेस स्ट्रक्चर कि उसके बिजनेस में क्या रिक्वायरमेंट. ठीक है. Correct. Now we come to the back that how we can make a automation. Right click on this one. इस प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करना है, सेम प्रोजेक्ट जो आपने बनाया है, एंड राइट क्लिक एंड यू विल गेट ऑप्शन न्यू टेस्ट सूट. यहां से आपकी स्टार्ट होती है ऑटोमेशन. सो यहाँ पे यू आर क्रिएटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ ऑटोमेशन. इन द Selenium you have created the test suite. Yes or no? TestNG में what is the topmost hierarchy? Suite. Yes or no? Yes. जिसने भी Selenium पढ़ा है उसको पता है कि TestNG में I told you we always use before suite
after suit, क्योंकि suit is known as the topmost hierarchy. And what is a test suite? Test suite is actually a collection of multiple tests. उसके अंदर कौन सा टैग होता था? Who is the main child of that suite? Test. That is called test module. I'm not, मैंने उस समय बताया था, don't confuse. Test tag is something different and @test in the annotation, that is different. When you are writing test tag in the XML, in the test and the XML, that is called test module. तो वहां you will see here I am creating the topmost hierarchy test suite. तो टेस्ट सूट एक्चुअली होता क्या है? टेस्ट सूट के अंदर आप बहुत सारे क्या रखते हो? मॉड्यूल रखते हो, या उसके अंदर मॉड्यूल के अंदर क्या रखते हो? यू पुट मल्टीपल टेस्ट केसेस. गेटिंग माय पॉइंट? यस. सो यहाँ पे आपने जब टेस्ट सूट बनाया, क्लोज इट. दिस इज योर टेस्ट सूट. नाउ राइट क्लिक ऑन योर टेस्ट सूट. टेस्ट सूट को आप एक नाम दे दो. व्हाट इज लॉजिकल नेम यू वांट टू प्रोवाइड? मैं नाम दे देता हूँ कि आई एम टेस्टिंग स्टूडेंट, सो आई एम सेइंग स्टूडेंट टेस्ट सूट. इज इट ओके? Now I have given just a name. मैंने भी स्टूडेंट टेस्ट सूट नाम दिया. जब तक इसके अंदर टेस्ट केस नहीं बनाऊंगा, टेस्ट सूट क्या होता है? टेस्ट सूट इज जस्ट लाइक ए लॉजिकल नेम. मैं बता रहा हूँ कि मैं एक टेस्ट सूट बनाने वाला हूँ. आपका टेस्ट केस तब तक टेस्ट सूट नहीं माना जाएगा जब तक उसके अंदर क्या नहीं ऐड करोगे? टेस्ट केस. यस और नो? सो आई एम राइट क्लिक ऑन टेस्ट सूट एंड सेइंग न्यू टेस्ट केस. यहाँ पे आप अपने टेस्ट केस को बनाते हो. तो पहला टेस्ट केस आप जो वेरीफाई करना चाहते हो, मैं भी आपके लिए करता हूँ. क्या? ऐड स्टूडेंट. Getting my point? I'm writing a test case. लाइए और अच्छा टेस्ट केस बनाता हूँ. Create and verify student. मैं एक टेस्ट केस कंप्लीट बड़ा सा टेस्ट केस बनाता हूँ. What is the test case? Create and verify student. मतलब स्टूडेंट का क्रिएट करो और वेरीफाई करो कि वो क्रिएट हो रहा है. Pradeep, one question. So this is we have collapsed the entire project, and against that project we are creating the test cases. But we can also expand the project, the different modules, and against the different modules also we can make the test suite, right? Like Yes. addition, getting, anything. So Okay. no. The thing is that actually this API contains operations. ये आपके क्या है? API Yes, में yes. operation. अभी आप test case जो बनाओगे, maybe test case can use multiple operation together. ठीक है? कैसे बताता हूँ? आपको पता है the purpose of add student to verify, add, create student functionality, right? Yes. तो आपने I am writing a test case, create and verify. मैं आपको बताता हूँ मैंने create and verify क्यों लिखा है. I will go one by one. ठीक है? So I have decided this is test suite, this is my create and verify student. Now I am writing my first step. आपका जो test case होता है, actual test case क्या होते हैं? Whatever steps you are writing. अगर indirectly go to the reverse order. Multiple steps make a test case. Multiple test case make a test suite, and multiple test suite make a project. Yes or no? Yes, yes. तो मैंने I have written a create and verify. मैंने एक नाम दिया है कि ये तब टेस्ट केस माना जाएगा जब इसके अंदर स्टेप बनाओगे. So how you perform the step, that is the main thing. So right click on your in this part test step and you will get so many options. Actually in SoapUI we have to learn these options. तो SoapUI में हमें क्या करना है? ये ऑप्शन ही हमें सीखने हैं कि कैसे यूज करते हैं ताकि बिना कोडिंग के हम अपना टेस्ट केस को क्या कर लें? टेस्ट कर. गेटिंग माय पॉइंट? तो Yes. सबसे पहले इफ यू वांट टू राइटिंग अ टेस्ट केस क्रिएट एंड वेरीफाई, तो क्रिएट एंड वेरीफाई के लिए सबसे पहला आप ऑपरेशन कौन सा टेस्ट यूज करोगे जिसको टेस्ट करना है? ऐड स्टूडेंट. ठीक है? तो ऐड स्टूडेंट के लिए करना क्या होता है आपको? यू विल गेट अ ऑप्शन. यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा टेस्ट रिक्वेस्ट और रेस्ट टेस्ट रिक्वेस्ट दिख रहा है. तो इस रेस्ट रिक्वेस्ट के बगल में अगर आप देखो इन द वाटरमार्क फॉर्मेट इट इज रिटन सोप. उसके ऊपर जो दिख रहा है उसके ऊपर सोप दिख रहा है आपको. ये देखो लेफ्ट साइड में ये सोप दिख रहा है बगल में. हाँ दिख तो रहा है. Yes, yes. whenever you are testing a soap based API, आपको यहाँ से ऑप्शन चूज करना है टेस्ट रिक्वेस्ट वाला, सोप वाला. अगर आप रेस्ट कर रहे हो तो आपको चूज करना है रेस्ट वाला. तो आप क्या कर सकते हो? एक्चुअली द ऑप्शन इज दैट इन द सेम ऑटोमेशन यू कैन यूज बोथ. इसीलिए आपको यूज कर रहा है. आप जो टेस्ट यूज करना चाहते हो वो टेस्ट वाला. तो क्लिक ऑन सोप एंड यू विल सी. यहाँ पे अपने स्टेप का एक नाम दे दो जो भी आप देना चाहते हो. मैंने नाम दिया क्रिएट स्टूडेंट. मैंने क्या दिया? क्रिएट स्टूडेंट. ये स्टेप का क्या नाम है? स्टूडेंट, क्रिएट स्टूडेंट. जब आप क्लिक करोगे तो आपसे बोलेगा स्टूडेंट में आपको, चूंकि आपने सोप रिक्वेस्ट वाला चूज किया है तो देखो ओके करते ही आपको सारे ऑपरेशन दिखाएगा. आपको कौन सा ऑपरेशन को इसमें यूज करना है. मैं कौन सा ऑपरेशन यूज करूंगा? ऐड. मुझे जरूरत ही ऐड की है एंड क्लिक ऑन ओके. ठीक है? Correct. Correct. जब आपको ये ऑपरेशन दिखाएगा तो इसके बाद इट विल शो यू 4 चेक बॉक्सेस.
इन चेक बॉक्सेस में लास्ट वाला आप जरूर क्लिक कर देना. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट आई विल टेल यू. जैसे आपके UI पे ऑप्शन इज दैट व्हेनेवर यू आर वर्किंग ऑन ए UI, few fields are mandatory and few fields are optional. हो सकता है ना, कभी कभी आपकी होता है क्रिएट स्टूडेंट, आप कहीं भी कोई फॉर्म फिल करते हो, हर फील्ड मैंडेटरी थोड़ा ना होती है. वो आपसे कहता है ईमेल डालनी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फोन नंबर डालना है. गेटिंग माय पॉइंट? Yes. सो इन दिस केस इट इज टेलिंग यू कि अगर आपकी एपीआई में रिक्वेस्ट पार्ट में कोई ऐसी फील्ड है जो आपकी मैंडेटरी नहीं है, तो आपसे बोल रहा है कि मैं उसे दिखाऊं कि ना. आप उसमें डेटा डालो ना डालो, दैट इज थिंग, लेकिन उसे दिखाना तो चाहिए. सो ये दिस चेकबॉक्स इज शोइंग यू, दिस चेकबॉक्स इज डूइंग दैट. ये कह रहा है कि अगर कोई ऑप्शनल है भी तो आप मुझे दिखाओ सैंपल में, मैं उसमें डेटा नहीं डालूंगा. दैट इज ओके. दैट्स व्हाई यू आर पुटिंग अ चेकबॉक्स. आप भी जरूर करना. ओके, नाउ यू विल क्लिक ऑन XML. सेम आपको दिख रहा होगा, सेम एपीआई जो मैंने यूज करी थी वैसे एक रिक्वेस्ट बन गई यहाँ पे. Everybody is able to see? Yes. Yes. Somebody asked me this thing, Pradeep, I want to use 2 requests. तो आप क्या करो, ऐसे ही 2 रिक्वेस्ट बना लो, एक ऐसी और कर लो, राइट क्लिक करके you can add the same step again. Yes or no? ठीक है, लेकिन आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको बार बार लिखना पड़ा तो फिर ऑटोमेशन का मजा क्या है. The benefit of the automation is that you will do everything. You will write the request once and you will change the data dynamically. ठीक है, चलिए. ऑटोमेशन का सबसे अच्छा पर्पस क्या होना चाहिए कि हमारे पास, हम मैन्युअली यहाँ पे डेटा क्यों लिख रहे हैं, हमारा होना चाहिए डेटा कहीं और लिखा जाए जहां पे हम डेटा चेंज करें. आप बार बार यहाँ पे डेटा चेंज करने आ रहे हो ना, तो हम डेटा यहाँ रखना नहीं चाहिए. स्टैंडर्ड हमारा क्या कहता है, व्हाट यू हैव लर्नड इन सेलेनियम, डेटा शुड बी केप्ट आउट ऑफ द क्लास. जावा क्लास से बाहर रखते थे, मैंने बताया था ना, स्टैंडर्ड कहता है. तो यहाँ पे देखो उसको, और उसमें रखने का तरीका मैंने, व्हाट इज द मेथड आई टोल्ड यू, व्हेन यू आर यूजिंग सिंगल सेट ऑफ डेटा यू शुड यूज प्रॉपर्टीज फाइल, एंड व्हेन यू आर यूजिंग मल्टीपल सेट ऑफ डेटा यू शुड यूज एक्सेल फाइल. तो अगर हम सिंगल सेट यूज करते हैं तो यहाँ पे हम बनाते हैं प्रॉपर्टीज फाइल. तो नाउ अगेन थिंग इज दैट you don't need to make effort for that. Simple, click on step, add step, and there is an option properties, and this step is actually show you a properties file in the UI format. तो यहाँ पे लिखते हैं create student properties. आप समझ रहे हो इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि जो ये 3 डेटा है टेस्ट डेटा, उसको मैं यहाँ पे डायरेक्ट नहीं रखूंगा. मैं हमेशा I will give the test data here. So I will create 3 fields here, plus name, age and subject. ठीक है? Pradeep, sorry to interrupt, but can we wrap up after this topic? Yes, I'm going to wrap it at the 10. Okay, in the 5 minutes I'm going to wrap it. Okay, so now you will create this student properties, and here you can set the value. So for example, you want to run this test case for Rashmi, RASHMI Rashmi, and age is suppose 21, and subject is supposed, take the example, rest assured. So this is your test data. Is it okay? Yeah. So now the thing is that with the help of automation, I will do very, very intelligent thing. This is your test data. So first of all, move this step first. आपका सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? क्रिएट स्टूडेंट होना चाहिए कि टेस्ट डेटा? पहले टेस्ट डेटा होगा तभी तो आप कॉल करोगे. So you should move it. कैसे मूव करेंगे? You can drag it, or you have an option, you can right click and there are option move up and down. Getting my point? So Pradeep, here the tag name should be exactly matching, right? Whatever we inputted, like No. Nothing. This tag name is different, and here you are just giving a variable name. It can be N-double-A-M also. You can take anything. It is just like a variable name, just like you put in the property file में आप करते थे ना, app URL username variable बनाते थे और equal to करके उसकी वैल्यू रखते थे. Yes. Same you are doing. So because ये UI दे रहा है तो आपको equal to नहीं लिखना है, ये name है, इसकी वैल्यू है जो भी आपको रखना है. Is it okay? हाँ. Okay. चलिए अब आपको मैं दिखाता हूँ एक सिंपल थिंग, देन आई विल बाइंड अप. ये मेरा टेस्ट डेटा रखा है, दिस इज माय फाइल, एंड आई विल नेवर टेस्ट इट, आई नेवर टच इट. मैं कभी इसको टच नहीं करूंगा. मैं इसमें क्या करूंगा, जब भी कोई डेटा रखना है तो मैंने अपना ऑटोमेशन बना लिया कि एनीबडी विल वांट टू टेस्ट एनी डेटा, वो अपना टेस्ट डेटा कहाँ पे अपडेट करेगा? यहाँ पे. आप रश्मि की जगह नाम, एज जो भी अपडेट करना है यहाँ करो. आई विल मेक ए ऑटोमेशन कि अपने यहाँ डेटा यहाँ से उठे एंड इट शुड गो एंड सेट इट हियर. गेटिंग माय पॉइंट? Yes. अपने आप डेटा मेरा क्या होना चाहिए, इस फाइल से रीड होना चाहिए और डेटा अपने आप यहाँ सेट हो जाए. मैं कभी इसको रिक्वेस्ट को टच नहीं करूंगा. मेरा ऑटोमेशन अपने आप डेटा यहाँ से रीड करेगा
and it will paste it here. कैसे करेगा? We will learn tomorrow. Getting my point? Yes. Yes. Pradeep, I have one question also, but I will ask it tomorrow. Okay. So the thing is that one thing is again important. Please revise. अगर आप revise नहीं करोगे, you will not explore it. Trust me, आप नहीं learn कर पाओगे. Otherwise, it is very easy. अगर आप explore करोगे, explore मतलब try to see कि मैंने recording में कुछ भी बहुत ज़्यादा पढ़ा ही नहीं रहा हूँ. If you will try to see the recording 2 times at least, you will understand little bit, and then you come to and ask me question. अगर आप ऐसे करोगे, then you have get something. है ना, आपके लिए न्यू टॉपिक है. अगर आप ये सोचो कि एक बार में आई नो दैट, क्योंकि देखो क्या, आपको एपीआई अभी प्रॉपर नहीं पता है, आप उसकी टेस्टिंग कैसे समझोगे? तो आपको मेरे साथ एफर्ट करना पड़ेगा. बट आई विल मेक श्योर कि अगर आप समझ गए तो आपका जो मेन पार्ट ऑफ दिस कोर्स दैट इज कॉल्ड रेस्ट एश्योर्ड, आई विल मेक इट वेरी वेरी स्मूथ. मैं इतना आसान बना दूंगा आपके लिए. और आपके इन योर प्रोफाइल रेस्ट एश्योर्ड इज आस्क 80%. आज के टाइम में अगर आप बोलोगे ना मुझे रेस्ट एश्योर्ड पे काम करना आता है, आपके सामने फिर SoapUI, पोस्टमैन और इन सब टूल की कोई वैल्यू ही खत्म हो जाती है. ठीक है, बिकॉज दैट इज इक्विवेलेंट टू द सेलेनियम. अगर किसी ने काम किया, दे नो दैट. अगर आप बोलते हो कि मैं रेस्ट एश्योर्ड में काम कर दूंगा, तो दे डोंट आस्क यू कि आप ऑटोमेशन कर सकते हो रेस्ट एश्योर्ड में. बट द थिंग इज दैट व्हेन यू अंडरस्टैंड दैट प्रॉपर्ली रेस्ट एश्योर्ड, व्हेन यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट हियर, बिकॉज यहाँ पे यूआई से अगर सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो रेस्ट एश्योर्ड में आपकी लाइफ इतनी आसान हो जाएगी. आप बोलोगे प्रदीप इससे टेस्ट करने से अच्छा तो मैं उसमें कर लूं. ठीक है, तो आप प्लीज रिक्वेस्ट, प्लीज रिवाइज द सेशन. आई विल अपलोड दिस सेशन. प्लीज रिवाइज इट एंड कम बैक टू. कल का टाइम बता दो वो इंस्टॉलेशन का, अगर नहीं हुआ तो. Installation, I will tell you. Wait, you are available after this session? Pradeep, I'm very sleepy. Okay. Do one thing. I will do one thing. I will tell you tomorrow in the morning. I have already a session at 10. So after that, I will tell you. Okay? Pradeep, I get free by 1. Like, I have some morning engagement. So I will check. I will update you, because the thing is that I also check that what is the, because the thing is that few. और मे बी हम 8:30 से पहले, मतलब 10 मिनट पहले मैं आ जाऊंगी, ऐसा भी कर सकते हैं शाम को. मतलब 8:30 से जैसे सेशन स्टार्ट होता है, so I can log in by 8:15 or something. Okay, I will tell you that. Okay. हाँ. Okay, so I'm binding the session for the day. Thank you.